Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Second lecture on forensic psychiatry. Some definitions very frequently asked during Viva. These are also the theory notes. Number one is the lucid interval. Lucid interval during the course of mental disease for some time, for some period, a person become mentally normal person. All the signs and symptoms of the mental disease become absent and person is perfectly mentally all right. This is called the lucid interval. So interval, the time duration for which a mentally ill person become all right, free from sign and symptom of the any mental disease. He become composed mentis. He become a mentally normal person is called the lucid interval. जो पागल आदमी है वो कुछ देर के लिए उसकी साइन एंड सिम्टम जो हैं बीमारी तमाम गायब हो जाती है और बिल्कुल नॉर्मल पर्सन बन जाता है, उसको कहते हैं, उस टाइम ड्यूरेशन को कहते हैं लूसिड इंटरवल. सो ड्यूरिंग दिस लूसिड इंटरवल ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल हिज क्रिमिनल एक्ट. ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल हिज contracts made by him. He will be responsible for all his crime during this lucid interval. Next is the guilty but insane. If an insane person has committed some crime, if the insane person has committed some crime, he will not be held responsible for his criminal act. So in that case, that at the time of committing the crime, the person was insane. So it is said that though the person is guilty, though the person has committed some crime, but he is insane, no punishment may be awarded. So guilty but insane means that a person who is guilty of his crime, he has committed some crime, but he is insane, so no punishment may be awarded to that person. एक आदमी है, वो जब उसने जुर्म किया तो वो पागल था, तो उस दौरान वो उसने जुर्म तो किया है लेकिन वो पागल है, इसलिए उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती. Guilty but insane. He has committed the crime but he is insane, and due to this he insanity he is absolved from the responsibility of his crime. This is called the guilty but insane. Policeman at the shoulder. Policeman at the shoulder. Now, ordinarily, when a sane person who is mentally normal, he commit a crime, he will see all around whether any person is seeing him or not, whether any person is present or not. He will see all around his vicinity and then he will commit a crime. Well, he believes that no person is seeing him. So, but in case of insane person, a person who is insane, he will commit the crime even if the policeman is standing very near to him. This is called the policeman at the shoulder. Policeman at the shoulder, ordinarily a normal person, will not commit the crime in the presence of other persons. So he will see the vicinity, he will see his surrounding, whether any person is seeing him or not. But an insane person who is not a mentally fit person, he will commit a crime even if policeman is standing very near to him. This is called the policeman at the shoulder. Even he will commit a crime, even the policeman standing is at the shoulder, very near to him. So एक आम बंदा जो है वो कोई जुर्म करने लगेगा तो इधर उधर देखता है कि कोई इसको देख तो नहीं रहा, उसको ऑब्जर्व तो नहीं कर रहा,
तो उसके बाद वो कमिट करता है, क्राइम करता है। जब वो देखता है कि उसको ये यकीन हो जाता है कि वो जो इधर उधर कोई ऐसा बंदा नहीं है, तो वो क्राइम करेगा। लेकिन जो एक पागल बंदा है वो कुछ नहीं देखेगा। अगर कोई पुलिसमैन उसके बिल्कुल साथ भी खड़ा हुआ है, इवन देन ही विल कमिट ए क्राइम। दिस इज द पुलिसमैन एट द शोल्डर। Unfit to plead. Unfit to plead is opposite to the guilty but insane. Here, the person was normal when he commits the crime. When he committed the crime, the person was mentally normal, but subsequently he became insane. The person was absolutely mentally normal. He was composed mentis when he commit the crime, but subsequently afterwards he become insane. Now in that case he is not able to defend himself before the court. The court send him to the in any psychiatry unit for treatment, and the proceedings of the case are pending till the recovery of the patient. This is called unfit to plead. अनफिट टू प्लीड का मतलब ये है कि जब बंदा उसने क्राइम किया, जब उसने क्राइम किया उस वक़्त वो बिल्कुल नॉर्मल था, वो मेंटली तौर पे बिल्कुल ठीक था, कोई उसको ज़हनी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब उसने जुर्म करने के बाद वो बंदा पागल हो गया, जुर्म करने के बाद वो बंदा पागल हो गया। अब वो अदालत के सामने अपना डिफेंस नहीं कर सकता क्योंकि वो तो पागल हो चुका है। तो इसलिए जो है उसको अदालत जो है वो उसको पेंडिंग कर देती है, उसके केस को, बंदे को सीधा भेज देती है साइकियाट्री यूनिट में, मेंटल हॉस्पिटल में। और मेंटल हॉस्पिटल में भेजने के बाद जो है उसको जब तक वो रिकवर नहीं हो जाता अपनी डिजीज़ से, नॉर्मल नहीं हो जाता, उस वक्त तक ये प्रोसीडिंग्स जो है ना पेंडिंग रहती हैं। इसको कहते हैं अनफिट टू प्लीड। व्हेन द पर्सन कमिटेड द क्राइम ही वाज mentally normal, composed mentis, but after committing the crime he become insane. So due to this insanity which occurs after committing the crime, he is unable to defend himself before the court. Now the court will suspend the proceeding against him and send him to the psychiatric unit or the mental hospital for the treatment, and the proceedings of the case suspended till the recovery of that patient. This is called the unfit to plead. Delusion. Delusion is a very firm belief on something which is not present. False belief, totally false belief on something which is not present. जैसे कोई बंदा ये समझे कि मैं इस दुनिया में बादशाह हूँ, वज़ीर हूँ। कभी पागलखाने आपको कभी विज़िट करने का मौका मिले तो आप देखेंगे कि उधर कोई सदर पाकिस्तान बैठा हुआ है, कोई वज़ीर-ए-आज़म बैठा हुआ है, कोई पूरी दुनिया का बादशाह बना बैठा हुआ है, कोई इंग्लैंड का वज़ीर-ए-आज़म बना बैठा हुआ है। आपको इस किस्म के खासे केस मिलेंगे। दैट इज़ कॉल्ड द डिल्यूजन। फॉल्स बिलीफ ऑन समथिंग विच इज़ नॉट प्रेजेंट इज़ कॉल्ड द डिल्यूजन। Illusion. Illusion means false interpretation. The something is present but the interpretation is false. Something is present, interpretation is false. As some in the wee hours, the dawn time, सुबह सुबह बहुत जल्दी जल्दी जब थोड़ा बहुत अंधेरा होता है, शाम के टाइम जब थोड़ा बहुत अंधेरा होता है, there is a rope on the ground or on the floor, and you misinterpret it as a snake. कोई रस्सी पड़ी हुई है, थोड़ा बहुत उधर अंधेरा है, तो सुबह के अर्ली सुबह या शाम के टाइम या रात को भी कोई रस्सी पड़ी हुई है फर्श के ऊपर और आप ये समझते हैं कि ये सांप है। दैट इज़ कॉल्ड द इल्यूजन। सो डिल्यूजन में ये है कि कोई चीज़ मौजूद नहीं होती लेकिन बंदा का बड़ा फर्म बिलीव होता है कि ये चीज़ मौजूद है। इल्यूजन में ये है कि कुछ चीज़ मौजूद होती है लेकिन वो मौजूद नहीं होती जो बंदा समझ रहा होता है। दैट इज़ कॉल्ड द इल्यूजन। Dangerous lunatic. So dangerous lunatic means insane person.
dangerous, he become dangerous. He start beating. You have seen that some person start beating other person at some public place. He take a stone, he take some type of brick in his hand, or he may have some type of stick in his hand and start beating other persons. This is called the dangerous lunatic, खतरनाक पागल. सो आपने देखा होगा कि जब कभी ये बंदा होता है, उसने ईंट पकड़ी हुई है, वो लोगों के पीछे भाग रहा है, लोग आगे आगे भाग रहे हैं जान बचाने के लिए, तो वो बंदा पागल है, या उसने लाठी पकड़ी हुई है, लोगों के पीछे लोगों को मार रहा है, लोग आगे आगे भाग रहे हैं, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड डेंजरस lunatic. So these are the some definitions which are very frequently asked during the viva. These are also the theory notes. So lucid interval means the interval in which a mentally abnormal person become totally normal. He is suffering from no sign or symptom of any mental disease. So he will be fully responsible for his criminal act during this lucid interval. Guilty but insane, the person means the mentally abnormal person has committed the crime but he is insane. No proceeding in the law because the person is insane. He has committed the crime, he is guilty, but he is insane. Policeman at the shoulder means a normal person will not commit a crime when a policeman is standing there, even at some distance. But an insane person will commit a crime even if a policeman is standing very near to him. This is the policeman at the shoulder. Unfit to plead means that a person was sane, was mentally normal when he committed the crime, but subsequently he become a mentally ill person. Now he is not able to defend himself before the court. This is called the unfit to plead. Delusion means false belief which is not present. कोई ऐसी चीज़ जिस पे पूरा यकीन होना जो मौजूद ही नहीं है, दैट इज़ द डिल्यूजन. इल्यूजन में कोई चीज़ तो मौजूद है लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन गलत है, जैसे किसी रस्सी को सांप समझ लेना. दिस इज़ द इल्यूजन. डेंजरस लुनैटिक, खतरनाक पागल, वो है जो कि who person start beating the other person on a public place. It is the dangerous lunatic. He becomes source of danger for the other public. Dangerous lunatic. Criminal responsibility. This is a university question. Criminal responsibility. So it depends upon the three factors. Criminal responsibility means liability to punishment. If a person is responsible for his crime or not. So the same way there is a diminished criminal responsibility. The person is responsible for his crime, but his responsibility is lessened, diminished. Criminal responsibility depends upon three things: age, insanity, and intoxication. So age, as you know, section 82 PPC, a child under 7 years of age will not be held responsible for his criminal act. Why? Because he does not know the nature and consequence of his act. So a crime committed by a person who is under 7 years of age, he will not be held responsible for his criminal act because he has not got sufficient maturity to know the nature and consequence of his act. And section 83 PPC, as I have already told you in the previous lectures, that section 83 is age between 7 to 12 years. Age between 7 to 12 years. So here a person will be held responsible for his criminal act if he, provided he has got sufficient mental maturity to know the nature and consequence of his act. So 7 से 12 साल का जो 7 साल से कम 7 साल तक की उम्र का बच्चा जो है वो अपने जो कोई क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी उसके ऊपर सेक्शन 82 के थ्री सेक्शन 82 पीपीसी के ज़रिए और सेक्शन 83 पीपीसी वो कहती है कि जिस बच्चे की
उम्र 7 साल से 12 साल के दरमियान हो, वो सिर्फ उसी वक्त ही अपनी क्राइम का रिस्पॉन्सिबल होगा जब उसमें इतनी मेंटल सफिशेंट उस मेंटल मेच्योरिटी इतनी आ जाएगी कि वो नेचर और कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्ट को समझ सके, तो दैट ही देन ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. सो रिगार्डिंग एज age from up to 7 years and age from 7 to 12 years. A person of 12 years and above age will be held responsible for his criminal act. So age up to 7 years, he will not held responsible for his criminal. From 7 to 12 years, he may be held responsible for criminal act if he had got sufficient mental maturity to know the nature and consequence of his act. At the age 12 years and above, he will be held fully responsible for his criminal act. Criminal responsibility depends upon age. Insanity. Section 84 PPC described that an insane person will not be held responsible for his criminal act. This is the McNaughton's rule. Also, NGRI, not guilty but by the reason of insanity, guilty but insane. He has committed the crime, but he is insane. So, an insane person will not be held responsible for his criminal act. The insanity. Then, third is the intoxication. Now, intoxication, if a person is under the effect of alcohol, he has consumed the alcohol and he is under the effect of alcohol in such a way that he does not know the nature and consequence of his act, then he will not be held responsible for his criminal act, but under certain circumstances. In our country, the possession of alcohol, sale of alcohol, and even the transportation of alcohol, all is intake of alcohol, all is banned. So intoxication means when the person has taken the alcohol and he is under the effect of alcohol. Two things: taken the alcohol, under the effect of alcohol in such a way that he does not know the nature and consequence of his act. Under the circumstances that he is not able to understand the nature and consequence of his act, then he will not be held responsible for his criminal act, provided that he has not taken the alcohol willfully. Provided, बशर्तिया के he has not taken the alcohol willfully. उसने अपनी मर्जी से अल्कोहल नहीं पी है. So अगर उसने ये नहीं है कि कोई बंदा अल्कोहल पी के 2-4 बंदे मार दे तो कहे ये I have taken the alcohol and I was intoxicated, I was under the effect of alcohol, so I am not responsible for my crime. No. The person has not taken the alcohol willfully. Under certain condition, the person may be forced to take the alcohol. उसने अपनी मर्जी से नहीं पी. Let's say some other person has forced a person to take the alcohol on gunpoint with the threat of death. कि मैं तुम्हें मार दूंगा. गन पॉइंट के ऊपर किसी को अल्कोहल पिला दी जाए तो अगर वो अपनी जान बचाने के लिए अल्कोहल पी लेता है, then he will, if he will commit a crime, he will not held responsible for his criminal act. Second possibility is that there is an earthquake, a person is trapped in a room, जलजला आया है, बंदा अंदर फंस गया है, बाहर जो है वो दरवाजे के आगे वो जो है ना वो मलबे का ढेर लगा हुआ है, खिड़कियां जो है ना वो किसी तरीके से वो बाहर नहीं निकल सकता, और जो है उधर जो है उस कमरे में सिर्फ अल्कोहल ही अवेलेबल है. तो टू सेव हिज लाइफ, वो वरना वो उससे जो है वो भूख से वो मर जाएगा. टू सेव हिज लाइफ इफ़ ही टेक्स द अल्कोहल, then he will not be held responsible for his criminal act. So please keep it in mind that this does not include the willful taking of alcohol. Intoxication does not include the willful taking of alcohol. So criminal responsibility depends upon three: age, insanity, and intoxication. Age, the person under section 82 describes that the person under 7 years of age will not be held responsible for his criminal act.
person between 7 to 12 years of age will be held responsible for his criminal act if he has got the sufficient mental maturity to know the nature and consequence of his act. Then he will be held responsible for his criminal act. Third, a person of age 12 years and above will be held responsible for his criminal act. Second is the insanity. An insane person will not be held responsible for his criminal act. NGRI, not guilty by the reason of insanity, guilty but insane, and McNaughton's rule. An insane person will not be held responsible for his criminal act. Then intoxication, then a person, he has taken the alcohol and he is under the effect of alcohol in such a way that he does not know the nature and consequence of his act, then he will not be held responsible for his crime. So the provided that the person has not taken the alcohol willfully. So these three on which this criminal responsibility is based. So criminal responsibility means the liability to punishment. Same way the diminished criminal responsibility, again all the three points come into action: age, insanity, and intoxication. Then feigned insanity. Sometimes a person pretend that he is suffering from some type of insanity. A person who has committed the crime, he pretends that he is insane person. वो जो बंदा है किसी ने जुर्म किया है, to avoid the punishment, to avoid the proceeding of the court, he act as he is an insane person. वो जो कोई बंदा है उसने जुर्म किया है, अपने जुर्म को वो जो है सज़ा से बचने के लिए वो ये शो करता है कि ये बंदा जो है ना वो पागल है, ताकि वो अदालती सज़ा से बच सके. So this is called the feigned insanity. The person is not actually suffering from insanity, but he pretend that he shows that he is an insane person. This is called the feigned insanity. Feigned insanity means the person shows that he is insane person, but actually he is not insane person. So that case is referred to a psychiatrist by the court to see whether this person is actually suffering from insanity or not. The case is referred by the court to a psychiatrist for estimation or evaluation of his mental status. This is called the feigned insanity. The person is not suffering from insanity actually, but he shows that he is suffering from some type of insanity so that he may avoid the punishment of that crime. Feigned insanity. Now, how to differentiate feigned insanity and true insanity? This is a university question. A person is brought to you to see whether a person is suffering from true insanity or feigned insanity. So how will you proceed in that case? The person is brought to you for evaluation of mental status, whether he is a insane person or sane person, and you will have to evaluate on the orders of the court to see whether actually he is suffering from some insanity or he is only pretending that he is an insane person. Now, the differentiating point between the true insanity and feigned insanity, this is a university question. Onset. In true insanity, the onset is slow. Gradual onset is there in case of true insanity. But in case of feigned insanity, there is sudden insanity. It is not slow to develop. It is not gradual to develop in case of feigned insanity. The motive in true insanity, definitely a motive is there. In case of true insanity, definitely a motive is there. In case of true insanity,
there is no motive present. It is without any motive. And a feigned insanity is definitely with a motive, with a purpose. Feigned insanity is definitely with a purpose, with a motive. True insanity is without any motive, without any purpose. Facial expression in and true insanity, they are certain facial expression that by looking the face of the person, it looks that that person is some type of suffering from a mental disease. Facial expression in true insanity points that he is suffering from some mental disease. In feigned insanity, the person, by seeing the face, it is not possible. It does not seems that he is suffering from any insanity. In feigned insanity, the face in true insanity, the facial, when you see the face of the person, you feel that he is suffering from some type of mental illness. But by seeing the feigned insanity person, there was no facial expression which indicates that this person is suffering from any type of mental disease. Observation. When in true insanity, the behavior of a person who is suffering from true insanity will remain unaffected. There will be no effect on a person whether he is under observation or he is not under observation. But if person who has a feigned insanity, he will be pretend as that he is insane person when is under observation, and when he is not under observation, he is become a normal person. जब उसको जो ट्रू इंसैनिटी वाला बंदा है, जब उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है तो वो जो है उसको ऑब्ज़र्व करें या ना करें वो उसी तरह ही रहता है. लेकिन फेंड इंसैनिटी में अगर बंदे को ऑब्ज़र्व करें तो वो पागल बन जाता है, लेकिन जब उसको ऑब्ज़र्व ना किया जा रहा हो तो वो जो है वो बिल्कुल नॉर्मल बंदा बन जाता है. दिस इज़ द ऑब्ज़र्वेशन. एंड ये जो सबसे अच्छा तरीका है उसका ये है कि जिस कमरे में बंदे को रखा जाए उसमें जो है वो CCTV कैमरे लगा दिए जाते हैं, और CCTV कैमरों के जो लगा हुआ है, कैमरे लगे हुए हैं, बंदा अंदर अकेला है और जो है ना वो समझता है कि वो जो है ना मैं अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं हूँ, तो जो फेंड इंसैनिटी वाला बंदा है वो तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है. लेकिन ट्रू इंसैनिटी वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अंडर ऑब्जर्वेशन है कि नहीं है. दिस इज़ द ऑब्जर्वेशन. In true insanity, the signs and symptoms point out towards a definite disease. In a person who is actually suffering from insanity, he will show the sign and symptom which point out towards a certain disease. But in case a person who is suffering, who is having the feigned insanity, who is not actually insane person, the sign and symptom don't point towards a certain disease. जो कि ट्रू इंसैनिटी है, इसमें जो साइन एंड सिम्टम है उससे कुछ अंदाज़ा लगा लेते हैं, कुछ डायग्नोज किया जा सकता है कि ये फ़लाँ डिजीज़ है. लेकिन जो ये जो फेंड इंसैनिटी है जो ऐसे अपने ऊपर तारी की गई होती है सज़ा से बचने के लिए, उसमें साइन एंड सिम्टम जो है ना ये मिक्स टाइप साइन एंड सिम्टम होती हैं और किसी भी डेफिनेट डिजीज़ की तरफ पॉइंट आउट नहीं करती फेंड इंसैनिटी में. वायलेंट एक्सर्शन. A person who is suffering from true insanity, he is very physically powerful person. He is physically a very powerful person, and by violent exertion he will not feel the fatigue. By violent exertion he will not feel the fatigue. ये जो एक्चुअली पागल बंदे होते हैं ना, ये मेंटली तो ये होते हैं पागल, लेकिन ये फिज़िकली जो है ना ये बहुत पावरफुल होते हैं. अगर उनको आप कहें कि वो जो है वो बैठ के लगाएं या डंड निकालें तो वो बैठ के जो है ना वो बैठते खड़ा होना वो निकालते रहेंगे, बैठते खड़े होते रहेंगे, वो उनको थकावट नहीं होगी. बिकॉज दे आर फिज़िकली वेरी पावरफुल. यूजुअली ये हमारे एक बच्चा था इधर, उसने जो है वो कंटीन में लड़ाई होगी तो
some type of he was suffering from type of mental illness, तो उसने पकड़ के कुछ 6 बच्चों को मारा पकड़ के, और वो 6 के 6 बच्चे भागने पे मजबूर हो गए. तो they are physically very powerful. ये जो पागल बंदे होते हैं, they are physically वो बड़े तगड़े होते हैं. उनको कहें कि वो बैठ के लगाना शुरू कर दें तो वो खड़ा बैठना, खड़े होना, बैठना, वो सारा दिन लगाते रहेंगे, फटीग महसूस नहीं करेंगे. जबकि द पर्सन हु इज़ सफरिंग फ्राम दिस फेड इंसैनिटी, जो कि प्रिटेंड कर रहा है कि मैं पागल हूँ, तो उसको ही विल फील द फटीग आफ्टर सम टाइम. उसको थकावट हो जाएगी एंड ही विल गो टू स्लीप. सो इन फेड इंसैनिटी the person will feel the fatigue. In case of this true insanity, the person will not feel the fatigue. Habits. Usually in case of true insanity, filthy habits, the person may avoid urine, the feces and the clothes on the beds. But in case of feigned insanity, जो बंदा ऐसे अपने ऊपर उसने ज़बरदस्ती तारी की हुई है, सिर्फ शो कर रहा है कि मैं जो है वो पागल हूँ, मैं पागल हूँ, एक्चुअली वो पागल नहीं है, तो वो जो है वो उठ के बाथरूम जाएगा इसके लिए, यूरिन के लिए और फीसेस के लिए. ही विल नॉट वाइड द यूरिन एंड द फीसेस इन द क्लोथ्स ऑन द बेड. So filthy habits will be present in case of true insanity, and these habits will not be present in case of feigned insanity. Physical manifestation of insanity. So the person who is suffering from actually mental illness, true insanity, there will be certain facial expressions, there will be dryness of the skin, there will be insomnia, there will be loss of appetite, anorexia. So these symptoms occur, sign and symptom occurs in case of true insanity. Facial expression, dry skin, then the constipation, then the anorexia, loss of sleep occurs in case of this true insanity, but these sign and symptoms don't occur in case of feigned insanity. Repeated examination. Now, a person who is suffering from the true insanity, he will not mind the repeated examination. He will not mind the repeated examination. But a person who is not suffering from actual insanity, who is pretending only, he will mind the repeated examination. So अगर जो है जो वाकई बंदा पागल है, उसको जितनी दफ़ा मर्जी इसका मुआयना किया जाए, he will not feel it, माइंड नहीं करेगा. लेकिन जो फेंड इंसैनिटी वाला बंदा है वो उसको माइंड करेगा कि क्या ये बार बार मुझे तंग कर रहे हैं. So that is the repeated examination will not be minded by the person who is suffering from true insanity, but the person who is suffering, who is having feigned insanity, will mind it, repeated, that why he is undergoing this repeated examinations. So this is how we differentiate between the feigned insanity and true insanity. McNaughton's rule, as you already know, to establish a defense on grounds of insanity, it must be clearly proved that at the time of committing the offense, the party accused was laboring under such a defect of reason from disease of mind. Defect of reason, disease of mind. As not to know the nature and quality of the act no. Defect of reason from the disease of mind, as not to know the nature and quality of the act he was doing, or if he did know it, that he did not know was doing what was wrong. Again the same things, the McNaughton's rule, that a person who is suffering from a mental disease in such a way that he does not know the
nature and consequence of his act, or he don't know what is wrong, what is right. It is called right from wrong test. He does not know right from wrong test. He does not know what is lawful, what is against the law. Then he will not be held responsible for his criminal act. This is the मैकनाटन रूल्स. ये 1834 में एक मैकनाटन नाम का एक बंदा था. तो वो इंग्लैंड में, वो उसको ये ख्याल था कि मेरी जो बेरोज़गारी है उसका ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है इंग्लैंड का, वो ज़िम्मेदार है. एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर लंदन में दौरे पर आया तो ये जो बंदा है मैकनाटन, ये उधर गया और इसके पास पिस्टल थी और इसने जो है उसके जो पीए था वो समझा कि ये जो पीए है ये ही वज़ीर आज़म है उसका. उसने उसको गोली मार दी और पर्सन उसकी डेथ हो गई. तो उस पर ये मैकनाटन्स रूल बना कि जी चूँकि वो उसको डिजीज़ ऑफ माइंड थी तो इसलिए ही विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज क्रिमिनल एक्ट. ये मैकनाटन्स रूल इंग्लैंड में बना था. इसके अलावा दूसरा जो रूल है ये 1958 में डरहम रूल बना था. ये बना था यूनाइटेड स्टेट्स में. इसको कहते हैं एन अक्यूज्ड इज़ नॉट क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल इफ़ हिज अनलॉफुल एक्ट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हिज मेंटल डिजीज़. एन अक्यूज्ड पर्सन is not criminally responsible if his unlawful act is the product of his mental disease. Now here the medical aspect is covered more as compared to the psychological aspect in case of that McNaughton's rule. Civil responsibility of insane person, management of property. Civil responsibilities of insane person is another university question. Management of property. If a person become insane, then he is not able to manage his property. The court will appoint a manager to look after his property. Contracts made by insane person are invalid contracts. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो एक पागल बंदा करेगा वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट तस्वर होगा अदालत की नज़रों में. मैरिज एंड डाइवोर्स, दीज बोथ आर फॉर द सेन पर्सन, फॉर द मेंटली नॉर्मल पर्सन्स. मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय एन इनसेन पर्सन will be considered as null and void, have no legal value. So if the divorce is awarded by an insane person, it will also not become effective. A witness, gawah, a person, an insane person cannot appear before the court as witness. This is a law that insane person will not appear before the court as witness. Consent made by an insane person will be an invalid consent. Consent made by an insane person will be invalid consent. So next is the testamentary capacity. Testamentary capacity means the capacity of a person to make a valid will. Valid will कहते हैं वसीयत को. will कहते हैं वसीयत को. वसीयत करते हैं कि वो मरने से पहले बंदा अपनी प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो कर जाता है. इस्लाम में तो काफ़ी ये चीज़ें क्लियर हैं कि प्रॉपर्टी का जो है मरने के बाद प्रॉपर्टी किस किस को जाएगी. बेटों को, बेटियों को 2 हिस्से, बेटों को 1 हिस्सा, 2 हिस्से बेटे को, 1 हिस्सा बेटी को, एंड सो ऑन. बार सम कुछ वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो ज़िंदगी में भी जो है वो अपना इसको वसीयत कर सकता है. बट इन अदर कंट्रीज़ वेयर देयर इज़ नो डेफिनेट दिस विल इज़ देयर, तो वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकता है. तो इसको टेस्टामेंट्री कैपेसिटी मीन्स द कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन टू मेक द वैलिड विल. कि वो जो बंदा है वो टेस्टामेंट्री कैपेसिटी जो है वो सिविल इसकी इंसेन पर्सन की
वो क्या है टेस्टामेंट्री कैपेसिटी. फॉर टेस्टामेंट्री कैपेसिटी द कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन टू मेक ए वैलिड विल. जो है वसीयत के लिए जो है वो क्या क्या शराइत हैं. टेस्टामेंट्री कैपेसिटी मीन्स द कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन टू मेक ए वैलिड विल. वसीयत करने के लिए नंबर वन इज़ द पर्सन शुड बी मेजर, एंड फ्रॉम मेजर इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट he should be 18 age of the person should be 18 years or above. The age of majority is 18 years, as you already know. Then second, this second point is that he should be compos mentis. For testamentary capacity the person should be major, the person should have compos mentis. He should be a mentally fit person. A mentally unfit person, an insane person, is not able to give a testamenter. To be able to be a testamenter. So for testamentary capacity the person should be a mentally fit person. Nature and consequence of his act. The person should know the nature and consequence of his act. To have a testamentary capacity the person should know the nature and consequence of his act. Number 4, for a testamentary capacity, fourth condition is that he should know the detail of his property. He should know the detail of his property. उसके पास property है कितनी और कहाँ कहाँ है. He should not be under influence of any person. He should not be forced for a will. He will do it voluntarily. He should give his property voluntarily without any undue influence. किसी भी प्रेशर के तहत ये होना नहीं चाहिए. वो अपनी मर्ज़ी के साथ वॉलंटरी फ्री विल के साथ जो है ना उसको ये जायदाद को तकसीम करना चाहिए. It should be in presence of two uninterested witness. It should be in presence of two uninterested witness. So for the testamentary capacity, the capacity of a person to make a valid will, जो है वसीयत करने के लिए क्या शराइत हैं. पर्सन को 18 साल मेजर होना चाहिए. एज ऑफ मेजॉरिटी इज 18 ईयर. ही शुड बी कंपोज मेंटस. ही शुड बी मेंटली फिट पर्सन. उसको ही शुड नो द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट. उसको पता होना चाहिए कि मैं ये प्रॉपर्टी दे दूंगा तो फिर मैं वापस नहीं इसको करूँगा, या उसको ये पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ उसकी नेचर क्या है और उसके नताइज क्या है. उसको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ द डिटेल ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड वेयर प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, कहाँ है और उसकी डिटेल क्या है. और ही शुड बी वॉलंटरली फ्रीली this giving the property under any undue influence, and it should be in presence of the two uninterested witness. This is the testamentary capacity. Criminal responsibilities, you already know, depends upon the age, insanity and intoxication. The use of violence as the dangerous lunatics. The person may suffer from sexual offense, may commit the sexual offenses, may have sexual perversions, deviation, an insane person. Stress, environment, conditional, hereditary, the factors which lead to the normal and abnormal mental health. And now we come on to this was all about the forensic psychiatry, and now we come on to the legal aspect of medical practice. LAMP. Legal aspect of medical practice. Very important from examination of point of view. First is the medical negligence. It is very frequent, not nowadays. Previously, कोरोना से पहले हर रोज़ कोई ना कोई केस जो है ना वो उसके डॉक्टर के ऊपर इल्ज़ाम लग जाता था
कि he has committed the medical negligence and that negligence lead to death of the patient. कहते थे जी डॉक्टर की जो है ना नेग्लिजेंस की वजह से ये जो बंदा है ना इसकी डेथ हो गई है. द मेडिकल नेग्लिजेंस इज मेडिको लीगल value, medical legal points. The definition of medical negligence, very important from examination point of view. It is a university question. Define the medical negligence and also give brief note on the types of medical negligence. So lack of two things are there. Number one is the damage. Damage you already know, nuksan. Number two is the damages. Damages means हर्जाना, ज़र तलाफ़ी. Damages और damage में फ़र्क है. Damage नुकसान होता है और damages claim किए जाते हैं. Damages means हर्जाना लेना, किसी से ज़र तलाफ़ी लेना, किसी के बदले कुछ चीज़ लेना, तो वो है damages. जैसे किसी बंदे डॉक्टर की नेग्लिजेंस से अगर किसी मरीज़ को कोई नुकसान पहुंचा है तो उसके लिए ही विल क्लेम द डैमेजेस, द केस ऑफ डैमेजेस. और जाने के लिए जो केस जो है वो अदालत में दायर करेगा वो ज़र तलाफ़ी के लिए करेगा, तो वो डैमेजेस है. डैमेज है, नुकसान है जी. लैक ऑफ एक्सरसाइज ऑफ प्रॉपर डिग्री ऑफ स्किल एंड केयर. It is the lack of exercise of proper degree of skill and care. Two things, skill and care. In diagnostic and or therapeutic techniques expected of a physician of one's own standing and repute, leading to damage. So lack of exercise of proper degree of skill. उसने ना तो प्रॉपर डिग्री ऑफ स्किल अप्लाई की है और ना ही उसने उसका ख्याल रखा है. एंड केयर इन डायग्नोसिस में भी और थेराप्यूटिक टेक्निक्स में भी. तो एक्सपेक्टेड ऑफ फिजिशियन ऑफ वन ओन स्टैंडिंग, जो उसकी उस जैसे जो दूसरे फिजिशियन हैं उस तरह उसके हिसाब से. एंड दिस नेग्लिजेंस लीड टू डैमेज. So the damage should be there. To claim the damage, to claim the damages, the damage should be there. If there is no damage, no claim, no damages, no claim of damages. So please keep it in mind कि डॉक्टर की किसी नेग्लिजेंस की वजह से अगर किसी मरीज़ को कोई नुकसान हुआ है तो वो डैमेजेस क्लेम के लिए अदालत जाएगा कि उसको ये नुकसान हुआ है. So the damage should be there. Damage should be there. Suppose that a surgeon during the operation, the pate is opened, he goes to have a lunch, खाना खाने के लिए चला गया. After lunch he came back and the procedure is completed, no damage occur. Now there is no damage, so no medical negligence. If there is damage, then the claim of damages is there. अगर डैमेज ही नहीं हुआ तो फिर मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं होगी. डैमेज होगा तो मेडिकल नेग्लिजेंस होगी. जैसे ये कोई सर्जन है, ऑपरेशन के दौरान वो छोड़ के किसी काम से चला जाता है, आगे फिर वो ऑपरेशन मुकम्मल कर लेता है, लेकिन अगर कोई मरीज़ को कोई डैमेज नहीं हुआ तो फिर ये मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं होगी. अगर डैमेज होगा तो फिर ये मेडिकल नेग्लिजेंस होगी. दूसरा ये है कि एक्सपेक्टेड ऑफ ए फिजिशियन ऑफ वन ओन स्टैंडिंग, जो एक आम डॉक्टर है, MBBS, then specialist and then consultants. 3 category. MBBS doctor, he is not a specialist, then a specialist and then consultant. मेडिकल्स जो डॉक्टर है MBBS, उसको कितना को करना चाहिए, उसको जो भी करना है उसको करके, उसको अगर वो उस केस को मैनेज नहीं कर सकता तो केस शुड बी रेफर्ड. सो एक्सपेक्टेड उतना ही है कि ये फिजिशियन को जो वो है ऑफ ओन स्टैंडिंग, उस लेवल का फिजिशियन कितना कर सकता है. अगर आप एक सिंपल MBBS डॉक्टर हैं, नॉट ए स्पेशलिस्ट नॉट कंसल्टेंट, सो आप जितना कर सकते हैं उतना करके केस को आगे रेफ़र कर दें स्पेशलिस्ट या कंसल्टेंट के पास. सो क्लेम शुड बी देयर फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस. अगर कोई डैमेज शुड बी देयर फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस. अगर डैमेज नहीं हुआ तो मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं है, डैमेज शुड बी देयर जी. Lack of, another definition of this medical negligence, lack of reasonable care and skill.
or willful negligence. Lack of reasonable care and skill or willful negligence on part of the medical practitioner in the treatment of a patient whereby health or life of the patient is endangered. सो कोई ऐसी चीज़ जिसमें जो है वो मरीज़ की जो है वो नेगलिजेंस, डॉक्टर की नेगलिजेंस की वजह से उसकी सेहत को या ज़िंदगी को ख़तरा हो, तो दैट इज़ ए मेडिकल नेगलिजेंस. नाउ लायबिलिटीज़ ऑफ ए डॉक्टर, क्या जिम्मेदारी है उसकी, लायबिलिटी क्या है? कंट्रोल ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट बाय पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल. प्रोफेशनली ही इज़ कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल. उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह करती है और पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल जो है वो उसको सज़ा भी दे सकती है. कंट्रोल ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट बाय PMDC, पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल सज़ा दे सकती है. वी विल स्टडी इट इन नेक्स्ट लेक्चर दैट व्हाट पनिशमेंट में कैन बी अवॉर्डेड बाय द पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल. Civil law and action damages brought by the patient. So, if any damage occur to the patient, then the person will go to the civil court and they claim the damages. वो हर्जाने का दावा करेगा कि मुझे इतना नुकसान हुआ है, वो इतने लाख हर्जाने का दावा करेगा कि डॉक्टर मुझे इतने लाख रुपया दे दे. If the civil negligence is there. So, criminal negligence, where the negligence of a doctor result into the grievous injury or the death of a person, it is the criminal negligence. Criminal negligence, where due to the negligence of a doctor, a grievous injury occurs to the patient or the death of the person occurs, it is criminal negligence. We will in the next we will describe the example of this criminal and civil negligences. Then other aspect of professional conduct. Other professional conduct, one is the PMDC controls overall control of the doctors or the professional conduct and professional misconduct and gross professional misconduct. Then the punishment awarded by the PMDC, then the civil court action of damages brought by the patient, then criminal liabilities of the person, and then the other aspect of the conduct, professional confidentiality and privileged communication. Professional confidentiality, this is also a university question. Professional confidentiality means any information which comes to know to the doctor during history taking or examination of the patient should not be conveyed to any person. It should be kept as a secret to the doctor. No information should be regarding the patient should be communicated to any person, any department or any other person is the professional confidentiality. Any information regarding the person which a doctor comes to know by the history of the patient, by the examination of the patient, any information which comes to know, which doctor know about the patient should not be communicated to any person, should not be, this information should not be divulged, should not be communicated to any person, is called the professional confidentiality. And if a doctor leaks this to any other person, information to any other person, then the claim of damages may be put before the court. अगर कोई डॉक्टर किसी भी तरह के मरीज़ का कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी और को देगा, तो वो जो है उसको वो डिफेमेशन, बदनामी का, वो मरीज़ जो है वो उसके ऊपर केस करेगा और डॉक्टर को जो उसका क्लेम को पे करना पड़ेगा. सो प्रोफेशनल कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स एनी इंफॉर्मेशन विच doctor knows by the history of the patient or by the examination of patient should not be told to communicate, to divulge to any person, is called the professional
confidentiality, and it is the legal duty to keep these secrets up to the doctor himself. They should not be told to any person. Professional confidentiality. Then are the privileged communication. Now here the doctor has, here the doctor can communicate this secret information under certain circumstances. Under circumstances, this professional confidentiality may be violated by the doctor. Doctor is allowed under certain condition to to leak this information, to communicate this information to other, and in certain condition. This is called the privileged communication. Ordinarily, a doctor is not allowed to leak any information about the patient to any person, is professional confidentiality, but under certain condition he is allowed to do so. He may leak this information, he may communicate this information, is called the privileged communication. As a court may ask the doctor about any information of the patient. Now the doctor has to obey the court. Now, but he should communicate this information in writing, in a sealed envelope, should be handed over to the court directly. So if this information may be needed by the court, so डॉक्टर की ये जिम्मेदारी है कि वो लिख के उसको बोल के ना करे, क्योंकि बोलने से जितने बंदे अदालत में मौजूद हैं उनको उसकी जो है ना उस राज का पता चल जाएगा, उस सीक्रेट का या उस इंफॉर्मेशन का पता चल जाएगा. उस इन दैट केस डॉक्टर जो है वो लिख के उसको लिफाफे में बंद करके सील करके अदालत को डायरेक्ट हैंड ओवर करे. इफ़ देयर इज़ privileged communication, same way privileged communication in cases of communicable diseases. The communicable disease में it is the duty of a doctor to notify the disease and this information sent to the district health officer. डॉक्टर को पता चला है कि कोई जो है वो उसका केस जैसे कोरोना का केस पॉजिटिव आ गया है. नाउ टू फॉर द सेफ गार्ड ऑफ द कम्युनिटी so that this epidemic may not spread among the other person. तो उसलिए ये चूँकि नोटिफाइएबल डिजीज़ है, इसलिए इस सिलसिले में वो नोटिफिकेशन जो है वो अपने DHO को भेज सकता है कि so and so person is suffering from coronavirus disease. So privileged communication means कि under certain condition the doctor is allowed to break the law of professional confidentiality and he may communicate this information to the others as in cases on the court order and in case of this communicable notifiable diseases. Then the defamation, the case of defamation may be put before the court if the any information regarding the patient is communicated by the doctor is leaked by the doctor. बदनामी का केस कि इसने मुझे बदनाम किया है. Next is the gift to the doctor. It is the only profession where the gifts are allowed. But the gift should be of ordinary nature. ये ठीक है, मरीज़ को ठीक हो गया तो वो आपको कोई मिठाई शिठाई दे गया, पर ये नहीं है कि आप उसके 2 लाख रुपए का उससे मोबाइल फ़ोन ले लें या कोई 2 लाख रुपए का उससे जो है वो लैपटॉप ले लें. तो गिफ्ट ऑफ ऑर्डिनरी नेचर आर अलाउड बाय द लॉ. छोटे मोटे गिफ्ट जो है ना वो डॉक्टर को दिए जा सकते हैं, लेकिन ये रिश्वत के तौर पे ये नहीं है कि 2 लाख का कंप्यूटर या 2 लाख का उसको ये मोबाइल दे दिया. नो. Ordinarily, the res ipsa locator is a university note. Res ipsa locator. Res ipsa locator. Ordinarily, according to the principles of justice, the first is the every person is innocent until proof otherwise, and second is it is the duty of the complainant to prove his case beyond doubt. Now, burden of proof is upon the complainant. It is the duty of the complainant. जो शिकायत कर रहा है, ये उसकी ड्यूटी है कि वो अपना केस जो है
वो अदालत के सामने साबित करे। Clear? Now, in case of this res ipsa locator, res ipsa locator means thing speaks for itself. Res ipsa locator means thing speaks for itself. So, so in that res ipsa locator, ये कानून जो है कि अदालत में जो है वो कंप्लेनेंट अपना केस साबित करेगा। अब जो है वो जो है इसमें जो है सबसे बड़ी जो एक मिसाल है वो ये है ड्यूरिंग द ऑपरेशन द डॉक्टर लेफ्ट द सीजर और एनी इंस्ट्रूमेंट और स्वैब इनसाइड द बॉडी, मे बी इनसाइड द abdomen. Now here the things are, so things speaks of it. This is the case of res ipsa locator. It is very clear that due to the negligence of the doctor, these things, these instruments has remained in the abdomen inside the body after operation. So in that case the thing speaks of itself. Now it is the duty of the doctor now to prove that he is not the negligent in this case. So this is called the res ipsa locator, means thing speaks for itself. Ordinarily जो है वो जो शिकायत कुनिंदा है, जो केस करने वाला है, वो साबित करता है कि ये जो है ना ये नेग्लिजेंस हुई है, ये उसकी ड्यूटी है। लेकिन जब रेस्ट इप्सा लोकेटर चीज़ें इतनी क्लियर हैं कि जो कैंची है, जो इंस्ट्रूमेंट है, जो स्कैल्पल है, वो डॉक्टर वो ऑपरेशन के दौरान अंदर छोड़ दिया गया है, इस सिलसिले में तो चीज़ें इतनी क्लियर है, डॉक्टर खुद अब डिफेंस करेगा कि ये उसको प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, प्रूफ तो उसके पास है, एक्सरे शेक्सरे हर चीज़ मौजूद है। तो अब डॉक्टर जो है ना वो ये प्रूव करेगा कि मैं नेग्लिजेंट नहीं हूँ। दिस इज कॉल्ड द रेस्ट इप्सा लोकेटर। There is no legal compulsion on a doctor to provide information concerning a criminal abortion, venereal disease, attempted suicide, concealed birth regarding his patient to any other individual or organization. Professional secret, professional confidentiality. No legal compulsion on a doctor to provide information concerning criminal abortion, venereal diseases या attempted suicide या concealed birth. So इस सिलसिले में ये डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो किसी को बताए। Issues involved in medical negligence. क्यों क्या इशू इन्वॉल्व हो सकते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस में? एक तो यह है कि ड्यूटी ऑफ केयर, whether the duty of care is established or not. Now the person is coming to the doctor, and in the way, on his way, he become serious. Now, and person may die. Now the person has not come to the doctor, so now the doctor is not responsible for his death. अगर किसी मरीज़ की जो है हॉस्पिटल के बाहर डेथ हो जाती है, एमरजेंसी के बाहर कहीं पड़ा हुआ उधर डेथ हो जाती है, तो डॉक्टर विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डेथ बिकॉज द ड्यूटी ऑफ केयर इज़ नॉट एस्टेब्लिश्ड. ड्यूटी ऑफ केयर उस वक्त इस्टेब्लिश होगी जब डॉक्टर मरीज़ डॉक्टर के पास आ जाएगा, then the duty of care will be established. So see where the duty of care is established or not. जब डॉक्टर मरीज़ के पास पहुंचा ही नहीं है तो there is no duty of care. Standard of care. Standard of care is according to the qualification and experience of doctor. A simple MBBS डॉक्टर क्या कर सकता है, एक जो है वो स्पेशलिस्ट क्या कर सकता है, और एक कंसल्टेंट तो है सब कुछ ही कर सकता है. तो व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ केयर? अगर एक मरीज़ आया है, बंदा आया है, उसको कोई ऐसा मसला है कि यू कांट ट्रीट हिम, तो जो नेसेसरी ज़रूरत है उसको जो ज़रूरत है उसको करके पट्टी शट्टी करके उसको जो भी अगर टेटनस का टीका लगा के तो उसको जो है ना आगे स्पेशलिस्ट के पास या कंसल्टेंट के पास भेज दें. तो स्टैंडर्ड ऑफ केयर इज़ आल्सो नीडेड कि एक बंदा या MBBS डॉक्टर है वो कितनी स्टैंडर्ड की केयर वो करेगा. एंड देन ड्यूटी टू एक्सरसाइज केयर एंड स्किल. अगेन द definition of exercise care and skill. So doctor should exercise complete care and skill of
द इक्वल टू द पर्सन ऑफ हिज ओन स्टैंडिंग। जितनी किसी के क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के मुताबिक जो स्किल है उसने उतनी ही दिखानी है। ये नहीं है कि एक जो डॉक्टर है वो सपोज नहीं है कि MBBS डॉक्टर जो है वो अपना ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन कर देगा या बाईपास का ऑपरेशन करेगा। नो, ड्यूटी टू एक्सरसाइज केयर एंड स्किल। Then duty to obtain consent. It is the legal duty of the doctor. Please keep it in mind. It is the legal duty of the doctor to obtain the consent from the patient. It is the legal duty before the examination, before the any diagnostic procedure, before any procedure on the body of the patient. It should be the consent should be before the act. So it is the legal duty of the doctor to take the consent of the patient, and it should be before examination, before the procedure, before the diagnostic procedure, before the operative procedure. It is the legal duty of the doctor to obtain the consent. Duty to keep abreast of technical knowledge. So it is the duty of a doctor to abreast himself with the modern techniques used in his specialty. The modern techniques used in his specialty, and he should know all that technique. इसको कम से कम ये नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कि जो नई टेक्निक्स कौन कौन सी आई हैं। जैसे एक्सरे में जो है, रेडियोलॉजी में पहले ये MRI वगैरह नहीं होते थे, CT स्कैन भी नहीं होता था, तो अब तो है MRI CT स्कैन सब कुछ आ गया है। तो जो रेडियोलॉजिस्ट है उसको इन तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए। जैसे ये अब ये रेस का जो इस्तेमाल है ट्रीटमेंट में, अगर किसी की स्पेशलिटी में वो हो रहा है तो डॉक्टर को जो है ही शुड हैव द मॉडर्न नॉलेज अबाउट हिज स्पेशलिटी, द लेटेस्ट नॉलेज अबाउट हिज स्पेशलिटी. Duty to use indicated diagnostic aids. It is also the duty of a doctor to use the indicated diagnostic aid. Please keep it in mind. If a patient comes to the doctor and doctor don't prescribe, if a patient comes to the doctor, he has history of injury, history of fall, he has swelling on the wrist joint, on the knee joint, on the elbow joint, then it is the duty of the doctor that he should prescribe the X-ray for that injury, whether a fracture or dislocation occur or not. If he don't prescribe the X-ray for that person, then he will be charged with the medical negligence. ये आपकी ड्यूटी है कि डायग्नोसिस के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप उसको दें. ड्यूटी टू यूज़ द इंडिकेटेड डायग्नोस्टिक एड्स. अगर डायग्नोसिस के लिए एक्सरे की ज़रूरत है एक्सरे कराएं, खून के टेस्ट की ज़रूरत है खून का टेस्ट कराएं. जो भी डायग्नोसिस के लिए ज़रूरत है वो आपने सब करानी है. लेकिन ये प्लीज़ कीप इट इन माइंड कि ये आप नहीं कह सकते कि चूँकि मरीज़ गरीब था इसलिए मैंने उसको एक्सरे नहीं लिख के दिया. नो, गरीब और अमीर का कोई मसला नहीं है. आपने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है. आप एक्सरे लिख दें, मरीज़ कराए या ना कराए ये अब उसका मसला है, लेकिन आपने लिखना ज़रूर है. एक्सरे या ब्लड टेस्ट या जो भी टेस्ट इंडिकेटेड है वो आपने लिखना है. So we will continue. I hope the time is enough. Thank you very much.